Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Today is Friday evening here in United States, and I'm doing this live stream with a very heavy heart. The way the markets tanked down, and where we are standing right now, and where we can go from here in the price section. We are going to discuss this in my technical analysis, both in English and Urdu. So first I'm going to do it in English, and then we'll transition ourselves to Urdu language later in this transmission. This is purely all going to be Bitcoin technical analysis video. So if you are here for something else, we are not going to discuss any altcoins, anything else, just Bitcoin technical analysis. What is going on in the market, what is pushing these prices so hard, so down, and where we can go from here, so you can make an informed decision regarding your finances, your investments. नाजरीन, ये आज की ट्रांसमिशन इस वक्त जो है वो सिर्फ बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, उसके प्राइस सेक्शंस के ऊपर जो इस वक्त हो रहे हैं, जितना इस वक्त प्राइस नीचे की तरफ गिरे हैं इस वक्त, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है बहुत सारे लोग। उनको क्या करना चाहिए, किधर जा सकते हैं प्राइसेस, और इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ों पे आज। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन के बारे में, उसके हवाले से किसी और चीज़ के बारे में, किसी एनएफटी के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे हम। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इस डिस्कशन में, तो कैरी ऑन कीजिए। अदरवाइज़ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट बिटकॉइन के बारे में बात होगी, पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। आप विजुअल्स को फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं इंग्लिश में भी, ताकि उर्दू में फिर आपको और मज़ीद समझने में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। All right, so today is a sad day for the Bitcoin investors, Bitcoin hodlers. As a whole, the markets are down quite bit, big digit losses all around the markets, especially Bitcoin markets. They are down 10 digits all the way. Nothing is in green, everything is down, everything is in red, blood is on the street. If you follow that method, that old singer Warren Buffett, that buy it when there's a blood on the street, even if it's yours. That is one option you have. You buy this dip and then wait that it will not go down further and it will carry on. But the strategy should be, if you are on that camp of buying the dips, and especially in this market right now, where we are seeing a lot of red, and markets keep dipping down, keep going down tremendously. People are suffering losses big time. So is there a hope in the end, or when the markets can stop going down and can come back? What is happening actually? Let's discuss. Let's see first what happened. So what I'm looking at right now is a daily, 1 day chart. As a daily chart. So we have been, you can see that we have been in a downtrend for a long time. This red signal, the sell signal came right at the beginning of this year, and all the months has been we have been really down and out. Here in the middle of it, like around I would say 13th of January, we did get a green dot, a buy signal, but it came with a very low volume. So I have been telling people that we are going sideways, and we are under this 20-day moving average, which is a very bearish sign that we are under bearish territory, and we are moving with a very low volume. So what happened today from yesterday? What happened from yesterday and today that markets went down so hard, so badly? Definitely, markets as a whole, the stock markets, everything is down. The equity markets, the investors don't like uncertainty.
That's one thing, and especially when they are expecting next week a meeting of Feds rolling out their plans about how they are going to increase the rates. Markets really don't like it, and especially when the newses are coming out this week that the economy is not doing so great. The economy is not strong. The unemployment numbers are bad. The inflation numbers are really bad. So everything is pointing towards that the people are not happy. The people are still suffering. They need help, and but the governments have no choice to control the inflation and stop printing money and try to um, stop this inflation rate and increase the interest rates um, gradually, and they plan to do it 3 times this year. So that is a big uncertainty that how much they are going to increase, when they are going to increase, even if the markets are showing no good indications. But still, there are so many uncertainties. Plus, there are a couple of other news like Russia. Russia tried to again came up with that effort that they are going to ban Bitcoin. They don't like it. They're going to impose ban on trading of Bitcoin in their country. Plus, there are some political issues. We know that after China kicked out a lot of miners, they went into Kazakhstan and all those countries around Russia, and then right now there are a lot of uncertainty over there. Things are not good politically over there. They are stopping miners and stuff like that is happening right now as we speak. A lot of wars and political unrest is going on around Middle East as well. So definitely investors are not very happy about it. They are taking their profits right now and running for the hills, as my um, uh, uh, my title suggests for this video, that people are doing that right now. People are running for the hills, taking their profits. Uh, what you should do in this case, in this scenario, if we look at the chart right now in front of our eyes, that yes, we had a great dip. Are we done yet? Nobody knows. It did not bounce back very hard. It did went all the way to, I think, uh, 36, uh, 35 and a half in many instances, and did bounce back a little bit only, and then still we are in a red candle for today that just started. So for this candle, so we are still red. So again, where we are heading from here, let's analyze what can happen with Bitcoin prices if they keep dropping down further. What is the next stop, and what are our plans? Should we take out our profits now and save it, or just wait a bit because markets can bounce back really quickly? That's another scenario, and we could miss all these gains. So it will be like a double loss for us, that we suffered that much loss. If you bought somewhere here and you have been suffering all these losses, and then if the market start rallying suddenly, then you'll miss all these gains. So it will be a double loss for you. So let's analyze that situation, right? Let's start putting some indicators on the chart. First of all, I would like to see VPVR, our volume profile visible range. That is a very key indicator that shows us where we are standing right now, and that is very concerning, as if you ask me. You see that there's not much support down here. So we are in a very dangerous territory. There's not much support as far as the volume is concerned below where we are standing. We are actually in the hill area, very low volume area, and then we can go down very quickly from here all the way to $32,000. So that is
another, that is one of the concern, that if we keep dropping from here, and is the bleeding, it does not stop here, and we could even see numbers like $32,000 like tonight maybe. And if that happens, then there's really no ceiling down here. There's no support, sorry. There's no support down here to stop these bleeding till we are in 2000, 28,000, $29,000 range. And we have seen that the Bitcoin previously bounced back on 29,000 range. There was the the great thing that happens at that time. Yeah, so now we can see, so I adjusted some uh, axis and y axis and x axis, so we know that our next big help is actually, we you can see that we are right at the top of the hill right now, and after that there's not much help, or there's not much support till we hit $20,000. So between $20,000 and $35,000, there's a huge vacuum of support. That is the alarming sign. That is the sign that indicates that the bear market started. If we keep falling from here, from this point, that is, I'm saying, if we keep falling and we went blow down, we went down this red line that is showing the top of this hill, this VPVR hill, on daily basis. If we see that this hill resides right at $35,000 range, so if we go, if we went past $35,000, then guarantees. There's no guarantee that we will not go down further till we hit $20,000 range. So that is the worst case scenario that could happen. So that's why, if you are not in a losses, that's what I say. If you bought somewhere in the current range previously, and if you're not in losses, then yes, definitely take out your investment. Don't go near to leverage trading right now. Not at all. This is not the right time to go in leverage trading. You will get yourself wrecked really bad. Right now, markets are really crazy. You never know what's going to happen next. We are just analyzing two different scenarios right now. That if we go down, what is the next stop? So as I said, yes, bulls can come in right back and they can say, yes, this is it. This is the lowest price. We could let this thing fall, and we are going to buy a lot at this price. A lot of big whales can come and put the prices high again. But if it's not happening, if the investors are shaky, and because of the world stage, what is happening around the world, people are not confident about the future, the near future, then definitely it's not the right time to invest for short term. Yes. And then if we are able to hold above this area, and we somehow, let's zoom in a little bit, if anytime we able to if we able to come back at around 40, above 40,000 and above, if we can jump back right, like next $4,000 jump, right now it's looking really, I would say, unlikely. So but if we can make that jump of 40 up to $40,000, yes, then I can say we are safe for now, because we had a lot of accumulation. We had a lot of accumulation at that point when Bitcoin hovering around $41,000-$42,000 mark. So we have a lot of strength in this area. You can see $40,000 range. We have a lot of strength, but below $40,000, we have to be careful. Right now, as you can see, that we are just touching these important areas. So what could
be the study. What you should do in these scenarios. Um, One, definitely if you are not in losses, you didn't buy at the top, you just a little bit in loss, or you are not even not in loss, just save your investment, get out from the trades, not to be in the leverage trading right now, not the right time for the leverage trading. um, and then but what will you do if you bought it at like $69,000, $64,000? At that point, you invested whatever money you have. Um, so at that point, I would say just hold yourself. Don't realize losses, because losses are not losses unless you realize them, unless you sell it. Things will get better. When? Nobody knows. I cannot tell you. I mean, there are so many bullish news also on the other side of the adoption of the Bitcoin, and how much investment is coming in the markets. That is amazing. So that is one thing that you can do. You just hold your investment and wait for it to bounce back. That is, I think, one of the option. If you are in losses, you should do. Another thing is what people have done, and I have done, and I've been. That is why I've been telling you guys a lot previously. If you look at my recent videos for 15-20 days, last 15-20 days, when the this thing is happening, the market is in the bearish trend, I have been talking a lot about different projects, different staking projects, different projects where you can stake your cryptocurrency. Even you buy NFTs. I have been covering a lot of Cardano NFTs. And if I just quickly show you what I mean, that if you bought in NFTs with your Cardano, the Cardano, no doubt, Cardano slipped down very sharply, just like with the market. But if you bought these NFTs like Pavia, Pavia, I mean, it's still 830. The floor price is 830. It's never gone down. It's keep going up and up. So all your Cardano is safe here. Your investment is safe, even doing better in the and other. If you ask me, even with the Cardano is going down, but here in NFTs is doing great. Same thing. And even if it goes down, it didn't go down so much. I told you just 2 days, 3 days ago, I bought this Borge Club NFT, and I can show you in my wallet that I put it on sale. This one, see, so this one I have, yeah. This is the one I have, yeah. So you see, I mean, it's not going anywhere. It's not decreasing in value unless I'll accept a less amount for this. It's not going down in the value. I mean, I bought it for 100 Cardano, and it's still the floor price for Borge Color, if you ask me, is still around 300 Cardano. See, so I'm already like 150% up on that. So a lot of people, I'm stressing a lot of these alternative investments, and these I've been talking about a lot of staking pools, a lot of places like DeFi Kingdom. I'll show you DeFi Kingdom, what have DeFi Kingdom done for me. That is amazing. That um, I staked a lot of my Harmony coins here, and I've showed you, I've done the video separately for DeFi Kingdom, how you can stake it here and how much you can earn in these staking pools. Uh, so this is another thing you could do while the markets are down and they are out. Uh, my internet is getting slower and slower, I think, as much things I'm opening at the same time. um, there's a news about MetaMask also, that there's some kind of
I don't know how true it is, but there is some kind of error in MetaMask which can expose your IP or something to the hackers. I don't know how much is true about it. So let's see, how's my investment, how's my staking doing here. Just give it a minute to load. So I'm just making a point that you guys don't feel bad about it, what's going on in the market, but you should do something else as well. So you can see that I just invested like $50 here. 350% APR is giving me. Already earned on $50. Already earned $7, and then here I already earned like 4 joule. The joule price also tanked down, but still with this price is $40 almost. I earned over $1,000 investment within 2-3 days. So it's a big earning. If you would say that the markets are going down and out, you are earning like 265% APR. And if I'm not selling these jewels for $10-12, because I know that just 2-3 days ago it was $20 per jewel. So if you talk about the original prices of jewel, that was like around $20, $25. So it's still, I mean, I'm like $80 in gain in 3-4 days. So that is another thing of looking at bright prospects, what you can do with your crypto right now when it's tanking that like this. So watch out for these labels, watch out for these price targets. If it goes further down, it's time to get out. If you are still in profits or you are at break even, but if you're in losses, hold on, do something else with your coins, like the things I've showed you, staking and buying some good NFTs project. I showed you how to spot a nice NFT project which has a good potential, and then also stake your coins in projects like DeFi Kingdom and all that, so you can still earning APR in a good rate. Although the markets are down, market will come back, that's for sure. Nobody knows when they will come back, when if it will be a V-shaped recovery, it will be a U-shaped recovery. Nobody knows what how far down it will go. I'll show you where it can go. There's a possibility, but nobody knows that if it goes that far or not. We are You see that I've shown you before that in the RSI we are sitting at 22 RSI. Bitcoin don't fall below 30 too often, and even if it fall below 30 RSI, it jumps right back up. So that is one of the asset that Bitcoin in asset history in this class, that if you go back as long as you want, you see that is not, whenever it goes back, it goes below 30. That's the line, that's the range actually, 30 to 70 of RSI. So whenever it goes below 30, it won't stay there for a long time, it jumps right back up within a few days, 1 or 2 days, because we are on daily chart. So we should understand that. So we only it will be there for 1 or 2 days, and then it will jump right back up. On the contrary, if it goes even above, if it's overbought territory, over 70, it remains there for a long time. We have seen that. So it does. So it shows, it's a very good indicator of markets bottoming it out and topping it out. So right now, markets really at the lowest level it can be. Right now is the most I would say the extreme selling pressure the market is right now under. All the indicators showing the right thing. Now the last thing I would say, that's my personal, very personal analysis, and I would say more than 90% they are right. I have seen this so many times, time after time again, time, that whenever everybody's shouting, oh, the market is crashing, or oh, the market is down, run for the hills, everybody is
look today's all these influencers, all these YouTubers, they are of the opinion that markets are down, going down further down, 20,000, $12,000 can go that far. Whenever everybody's shouting, whenever everybody's in fear, market always turn back and rally. Whenever people are saying the markets are going to blow up top, but that's it. Everything is so pointing towards upside. This is going to be a November. This is going to be the best December ever. This is going to be the best January ever. Whenever people are shouting like that, markets always does it opposite. They always tanked. They always goes down. Why? There can be some clear indications that yes, there are some big whales who manipulate the markets. There are some big giant whales who sees what people are doing, like exchanges. Uh, all the big exchanges knows where the people's sentiments are, where the people are betting their bets. They are putting a lot of longs features, a lot of money they are putting on long trades. It means that people are thinking that it will go very far, very high, very quickly. Then they put they probably, whatever collaborations they have with big whales, they tell them and they collaborate each other, and then they put some short positions, open some very big short positions, and then start selling. So what happened that they start that snowball reaction, and then once that happened, everybody starts selling. Everybody's saying, oh, the bad news are coming, the economies are bad, the Feds are doing something, all the news, and they use those timing to time that snowball reaction. On the contrary, also, if they see that a lot of short people are thinking, oh, this is going to be like right now. Everybody is talking about downsizes. People, I mean, even if they are looking at the charts, they are saying that this is a perfect head and shoulder position. This is, you can see, this is head, this is one shoulder, and this is second shoulder forming. People are saying that this will go down. This will go down to 20,000 easily. This is a neckline at $30,000 right here. It can come down to $30,000 easily. People are doing all these technical analysis. So again, the 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 movers and shakers knows about it, and once they knows about it, where people are placing their bets, they'll do exact opposite. We'll see tomorrow if that happens. In a day or two, if we see a sudden change in the market, sudden change, we'll know exactly. And I'll play this lines from me from today to you guys if that happens, and I'll tell you. See, again it happens. I have been telling you again and again, and this time again, this happens that when everybody, the sentiments that everybody's saying is markets are going to gutter, going to down, going to the core of the earth. This is where the markets will come back, and very sharply. That's my 2 cents. I hope you enjoy these analysis today in English. Now I'll switch back to Urdu audiences. आपने अगर जैसे विजुअल्स फॉलो किए हैं, मैंने दिखाया जिस तरह से आपको बताया है इंग्लिश ऑडियंसेस को अपनी इंग्लिश में कि बिटकॉइन जो है ख़तरे में है बहुत ज़्यादा. नीचे जा सकता है जी, बिल्कुल जा सकता है नीचे, मज़ीद नीचे हमने बात की है कि कहाँ तक जा सकता है. ईज़िली यहाँ से स्लिप कर सके 30,000 तक तो बहुत ही ईज़िली जा सकता है. जब 30,000 तक यहाँ तक आता है बिटकॉइन अपने नेक लाइन पे, यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन बनती है, तो $30,000 के बाद जो है इसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है $20,000 तक. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ जो है वो इस बहुत ही क्रूशल लेवल पर, जहाँ पर इस वक्त ये है एक तरह की पहाड़ी है, ठीक है ना. इसके ऊपर यहाँ पर बॉल है, अगर इसको रोल करेंगे आप इस तरफ या इस तरफ, ये बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी, राइट. तो यही बोलो इसका तरीका है कि अगर ये जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इससे नीचे अगर ज़रा भी आया 35,000 के नीचे क्रॉस करता है, 35,000 इसको क्रॉस करता है, 35,000 एकदम बिल्कुल सी चोटी की एकदम पिन पॉइंट है, एकदम से बिल्कुल इसका टॉप है. अगर 35,000 को क्रॉस करके नीचे आता है तो चांसेस हैं कि बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगा, गिरेगा ये, और 20s में चला जाएगा. और 20s में जो है इसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो 20s में कहीं भी जा सकता है. 20s में इसकी जो हद है वो, जो आखिर में फिर इसको जो थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी वो 20,000 पे आके मिलती है, जो कि ऑल टाइम हाई था इसका काफ़ी अरसे पहले. तो
इसको जो है ये अपनी पोजीशन होल्ड करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त जहाँ पर है मौजूद ये इस वक्त $36,000 को अपना होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसको वापस बहुत तेज़ी के साथ 40,000 अगर डॉलर पे आता है तो चांसेस होंगे कि वापस दोबारा से रिकवरी की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर आप जितने भी इस वक्त टेक्निकल एनालिस्ट की वीडियोस देखें ऑनलाइन जाके देखें जो भी हैं सब चीख रहे हैं कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, मार्केट्स आर डन, अपने पैसे बचाइए और हिल्स की तरफ भागें। मैं भी आपसे ये कहूँगा कि अगर ठीक है अगर आप ज़्यादा लॉसेस में नहीं हैं, ब्रेक इवन पे हैं, प्रॉफिट्स में हैं या तो अपने प्रॉफिट्स को बचाइए और सेव करके अपने इस चॉपी मार्केट से बाहर आइए। क्यों टेंशन दें अपने आप को, और लेवरेज से तो बिल्कुल ही दूर रहें। तो एक तो ये, दूसरा मेरा ओपिनियन आपको ये हो सकता है कि अगर आप ने हाई प्राइस पे काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हुई हैं, ख़ासतौर बिटकॉइन या कुछ और, तो उसको आप फिर लॉस में ना सेल करें, बिल्कुल भी लॉस में ना सेल करें उसको, और उसको होल्ड करके रखें फिर, और वेट करें मार्केट्स के वापस बाउंस करने का। मार्केट डेफिनेटली करेंगी बाउंस वापस, लेकिन कब करेंगी किसी को नहीं पता, नोबडी नोस, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन करेंगी डेफिनेटली। तो आप लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है आपको अपना बिटकॉइन या कोई भी एसेट। तो अगर अब वो अपने लॉस में है अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तो उसको सेव करके रखें, उनको अपने होल्ड करके रखें। या मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कार्डानो, अगर आपने 1000 कार्डानो ख़रीदे हैं 1000 कार्डानो, तो उसकी प्राइसेस कुछ भी अप एंड डाउन, आपने हो सकता है वो $3 पर ख़रीदा, $2.5 पर ख़रीदा हो कार्डानो, 1000 कार्डानो, और इस वक्त जो 1000 कार्डानो जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 1/3 रह गई है बिल्कुल। तो आप उन 1000 कार्डानो का अभी भी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं NFT के अंदर। NFT के प्राइसेस बिल्कुल नहीं गिर रहे। आप देखिए पाविया जो कि हम डिस्कस करते हैं अपने रिसेंट टाइम में, 830 का पार्सल है एक लैंड का, और ये पार्सल $830 में नहीं है कि आपको इस वक्त जो है वो लॉस में या उसमें ख़रीदना पड़े। ये कार्डानो में है 830, तो अगर किसी ने 1000 कार्डानो ख़रीदे हों, इवन मैं कहता हूँ कि $3 के, $2.5 के ख़रीदें, जब मैक्सिमम ऑल टाइम हाई पे था कार्डानो, तब भी उसको उतने का ही पड़ेगा, 830 का ही पड़ेगा, उतने ही कार्डानो का पड़ा ये। तो आप जो है इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर लें जो कि अपनी जो वैल्यू को होल्ड करके रखी हुई जो इन्वेस्टमेंट्स, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक पाविया, उसमें, या आप स्टेकिंग कर सकते हैं अपने कॉइन्स को डीफाई किंगडम के प्रोजेक्ट जो कि हमने अभी डिस्कस किए कुछ ईयर से पहले। उसमें आपके APR 200% से ऊपर आपको APR 350 APR आप देखिए यहाँ पर बन रहे हैं। तो इतने ज़्यादा हाई APR अर्न कर सकते हैं आप। और अभी जो रिवॉर्ड्स में आपको ज्वेलर्स में मिल रहा है उनको बेचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी प्राइस गिरे हैं उसके, उनको होल्ड करके रखें। आपको रिवॉर्ड्स में कॉइन्स मिल रहे हैं, आपको डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको तो कॉइन्स मिल रहे हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स में, उन कॉइन्स को होल्ड करके रखें, उनकी वैल्यू वापस बाउंस बैक करेगी, और फिर आप जब वो हाई प्राइस पर हो जब बेचें उसको आप, तो आप यहाँ पर वो अर्न कर सकते हैं। मैंने सब वीडियो आपको पिछले 10-15 दिन में, ख़ासतौर पर आपके मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी चल रही है, और तो उसमें मैं सारी चीज़ आपको इसीलिए ही बताता आया हूँ, इसीलिए हम डिस्कस करते आए हैं ये सारी चीज़ें, ताकि आप इनसे फ़ायदा उठाएं और डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, एक ही चीज़ में खाली बिटकॉइन में नहीं लेके बैठे रहें, ताकि आपको ओवरऑल नुकसान कम से कम हो। अगर इस तरह की मार्केट की सिचुएशन जैसे इस वक्त है अगर ऐसी हो जाती है तो ये है। और इसके अलावा हमने इंग्लिश में जैसे डिस्कस किया कि RSI वगैरह इतने नीचे रहते नहीं हैं अमूमन। इस वक्त जो RSI 22 पे बैठा हुआ है, 30 से नीचे जब भी RSI जाता है इसका बिटकॉइन का बहुत तेज़ी के साथ ऊपर वापस आ जाता है, ज़्यादा दिन तक 2-3 दिन से ज़्यादा नीचे रहता नहीं है। और ऊपर इसके अगेंस्ट जब 70 से ऊपर होता है, ओवर बॉट कंडीशन में होता है, तो फिर भी रहता है कुछ अर्से तक, अपने आप को होल्ड करता है, सस्टेन करता है ओवर बॉट कंडीशन में भी ये बिटकॉइन। तो ये एक प्रूवन फैक्ट है। आप पीछे जाके इसके पूरे जितना भी चाहें पीछे जाके देख सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच है RSI के हवाले से। तो इस वक्त तो हम बहुत ही ओवर सोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो किसी वक्त भी बिटकॉइन को जो है टेक्निकली डेफिनेटली उसको बाउंस बैक करना चाहिए। करेगा या नहीं करेगा इसका फ़ैसला टाइम करेगा, लेकिन जो मेरे इंग्लिश में मैंने एनालिसिस दिया आपको, मेरे अपने ज़ाती एनालिसिस जो इसके अंदर हैं वो यही है कि हमेशा मार्केट उल्टा करती है। उसकी वजह कोई भी हो सकती है। बिग एक्सचेंजेस जो उनको पता होता है मार्केट्स के लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोग लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादा हैं या शॉर्ट ट्रेड में ज़्यादा हैं, वो अपना जो उनके वेल्स के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए मार्केट्स के अपोजिट जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गेंस की तरफ जाते हैं। जस्ट लाइक कैसीनोस,
जैसे कैसीनोज का होता है, वो कि उनको हमेशा कैसीनो विन करता है, जो इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ कि लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि वो कैसीनो की तरह से है उसका जो सिस्टम है कि वो हमेशा लोग नहीं जीतते उसमें। ज़्यादातर कैसीनो आप एक बैट जीतेंगे लेकिन 10 बैटें हारेंगे फिर उसके बाद आप। इसी तरह से वो इतने बड़े कैसीनो इसीलिए बने हैं। जो बिट बाइनेंस का जो मालिक है सीजी, वो दुनिया के 10 बड़े अमीर तरीन लोगों में से एक है। वो ऐसे ही बना है शायद, ऐसे बेचारे लोग जो जल्दी अमीर होने के चक्कर में और क्विक मनी बनाने के चक्कर में लेवरेज ट्रेडिंग में पैसा फंसाते हैं, वो इसी तरह रैक होते हैं फिर वो। और उसी की वजह से मार्केट्स जो हैं पर और डबल इफेक्ट आता है उन पर, एक स्नो बॉल इफेक्ट आता है इसको कहते हैं ना। स्नो बॉल, थोड़ी सी बॉल रोल कर दें आप, वो स्नो पे जाते जाते आते बड़ी होती जाती है वो। इसी तरह से इफेक्ट आता है उसका भी लिक्विडेशंस का। कल ही के वक्त, सिर्फ कल इस में जो है $500 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है लॉन्ग की। तो उनको जाहिर है तो किसी न किसी की जेब में तो पैसा गया ना, वो निकल गया। और वो कहाँ गया? डेफिनेटली एक्सचेंजेस की जेब में गया पैसा। और जिन वेल्स उनका साथ दिया, शॉर्ट ट्रेड्स की होंगी उन्होंने, शॉर्ट पुट किए होंगे उन्होंने, खूब पैसा बनाया उसमें। और तो डबल मारते हैं वो उस तरह से लोगों को। मेरा मशवरा इस वक्त यही है कि लेवरेज ट्रेडिंग तो बिल्कुल दूर रहिए आप। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसको प्रॉफिट्स को अपने सेव कर लीजिए, और इस वक्त मार्केट्स को बाहर बैठ के देखिए कि किस तरफ इसका टर्न लेती हैं मार्केट्स। फेक आउट्स हो सकते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कल भी हुआ सुबह में कि एकदम से ऊपर जाते जाते मार्केट नीचे आ गई। तो इस तरह के फेक आउट्स हो सकते हैं दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। और दोनों ही तरफ के शॉर्ट्स और लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जा सकता है। इस वक्त लोग सेंटिमेंट सबके यहीं के नीचे आ रही है मार्केट, हर एक कोई चीख रहा है। जैसे मैंने आज की लाइन रखी है अपनी टाइटल यही रखा है मैंने सबका। मैंने तो एक मजाक के तौर पे रखा है टाइटल, लेकिन लोगों ने हकीकत में लोगों को ये बता रहे हैं सब बेरिश हो गए बहुत ज़्यादा। मार्केट नीचे या 20,000 तक जा सकता है बिटकॉइन, 12,000 तक जा सकता है बिटकॉइन, सब इस पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको प्राइस टारगेट्स बता दिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सतह पर है इस वक्त। अगर इसको होल्ड करता है, इससे ऊपर वापस आता है ऊपर तो अच्छा होगा, वरना 32,000 30,000 तक भी जा सकता है इजीली। और उसके बाद फिर हमें देखना होगा किस तरफ उसका ट्रेंड जाए, वापस वी शेप रिकवरी में आ रहा है वापस ऊपर, या मज़ीद नीचे आ रहा है मज़ीद। फिर मैंने बताया आपको, आप ख़ुद भी देख सकते हैं 30,000 और 20,000 के दरमियान ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। तो 20,000 और 30,000 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 20,000 में अगर 30,000 को अगर टच कर देता है और उसके बाद से वापस तेज़ी के साथ रिकवरी नहीं करता बिटकॉइन, तो बहुत नीचे जा सकता है। फिर वो 20,000 को टच कर सकता है डेफिनेटली। टेक्निकल एनालिस्ट जो 20,000 की फिगर बोल रहे हैं वैसे नहीं बोल रहे हैं, उनको पता है ये चीज़ कि कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट्स मौजूद हैं। तो ये सब इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे कंक्लूजन में इंग्लिश में भी मैंने बताया आपको, उर्दू में भी उसी का कंक्लूजन कर दूं कि मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो कि हम 1-2 दिन में उसको देखेंगे और फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं यही लाइंस प्ले भी कर दूंगा आपके लिए दोबारा से फिर अपनी अगली वीडियो में, जब हम ये कर रहे होंगे कि जब भी सब ये कह रहे होते हैं कि नीचे जा रही है, नीचे आ रही है मार्केट, एकदम से पलट के ऊपर आ जाती है। जब सब कह रहे होते हैं कि मार्केट बस ये दिसंबर तो बस फेवरेट दिसंबर है, जनवरी ऊपर जाएगा मार्केट सभी, उस वक्त एकदम से नीचे आ जाती है मार्केट। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। लेवरेज जो को लिक्विडेट करने का, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट, उनको तरीका होता है ये मार्केट्स का। एक्सचेंजेस मिले हुए हैं वेल्स के साथ, वो मिल के ये गेम खेलते हैं। और लोग बेचारे जो लेवरेज ट्रेडिंग में अब ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में अपने पैसे गंवा देते हैं। अगर आपने ख़रीद के होल्ड किया हुआ तो कोई आपसे छीन नहीं सकता उन कॉइन्स को। अच्छे कॉइन्स में आपने पैसे रखे हुए हैं तो वो आपके वापस आ जाएंगे। वो लॉसेस जब तक रियलाइज़ नहीं है आपके, जब तक आप उनको सेल नहीं कर रहे हैं। सेल कर दिया आपने एक दफ़ा तो आपने रियलाइज़ कर लिया लॉसेस, दैट होता है। तो जब तक आप सेल नहीं कर रहे हैं तो आप दिस इज़ नॉट योर लॉस। ये एक जर्नल डिस्कशन था जो कि मैं आज करना चाह रहा था। आप लोगों को थोड़ा सा हकीकत से भी आशना रखना चाह रहा था कि हकीकत में क्या हो रहा है मार्केट में इस वक्त। जो न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा लोग मार्केट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं इस चीज़ को, जितना अनसर्टेनिटी पैदा की हुई है फेड्स ने ख़ास तौर पे यहाँ पर यूएस में। नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और इकनॉमी के इतने कोई स्ट्रॉन्ग इकनॉमी की इंडिकेशन नहीं आई हैं। इन्फ्लेशन रेट स्काई हाई है, सब जानते हैं, यहाँ रहते हैं कितना महंगाई बढ़ी हुई है, सब जगह दुनिया में बढ़ी है, यहाँ भी। और कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं पूरी दुनिया में, मिडल ईस्ट में, रशिया में, यूक्रेन वगैरह के साथ, के जिससे काफ़ी अनसर्टेनिटी मार्केट्स में पैदा हुई है। अब सारी मार्केट, पूरी इक्विटी मार्केट इस वक्त काफ़ी बेरिशनेस का शिकार है शॉर्ट रन में। ये हो सकता है अगले हफ्ते तक सब कुछ ये ऐसे ही चलता रहे, एक हफ्ते और,
मार्केट्स हैं इस तरह से बिहेव करती रहें, अप एंड डाउन और मोस्टली डाउन। लेकिन उसमें मैंने आपको बता दिया कि मेरा आइडिया है कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स उसके नेगेटिव होते हैं तो एकदम से मार्केट प्राइस एक्शन जो है ख़ासतौर पे क्रिप्टो मार्केट में उसका अपोजिट रिएक्ट करता है। और लेट्स सी कि ऐसा होता है कि नहीं होता दोबारा, क्योंकि इस वक्त तो मार्केट में वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थाट्स के साथ बैठे हुए हैं लोग। सो होपफुली कि उसके अपोजिट हो और दोबारा से मार्केट्स तेज़ी के साथ ऊपर आए। हम जब बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इस वक्त ये कैंडल जो है, करंट कैंडल जो है, ये डेली कैंडल जो अभी फॉर्म हुई है, कोशिश कर रही है वो ग्रीन टेरिटरी में आने की। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी आगे आने वाला टाइम हमें बताता है कि क्या होता है। मेरा अपना ख्याल यही है कि मार्केट्स जो हैं वो जब तक क्लियर कट फेड्स की तरफ से जो है वो नहीं आ जाती इंफॉर्मेशन, जब तक जो है अनसर्टेनिटी में ऐसे ही अप एंड डाउन थोड़ा सा चॉपी रहेंगी। तो इसलिए मेरा मशवरा यही था सबको कि अपने प्रॉफिट्स को सेव करें, लेवरेज ट्रेडिंग से तो बहुत दूर रहिए। इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता था लेकिन मैं आज नहीं टच करा, जैसे संडे शॉप वगैरह के बारे में। राइट नाउ इस इररिलेवेंट, राइट नाउ इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया संडे शॉप को। इट्स वेरी नाइस, बहुत नामी वॉलेट से कनेक्ट करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विडिटी वगैरह इसकी शुरू हो चुकी है, लिक्विडिटी पूल इसके। ये तो काफ़ी अच्छे कॉइन्स जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। जो मैंने कल आपको बताया था, एक मिल्क के नाम से कॉइन था, उसका मैंने आपको बताया था मिल्क का जो शॉप था वहाँ अवेलेबल थे। यहाँ पर भी वो कॉइन्स इन दो जाहिर से कार्डानो का शॉप है, पाविया वगैरह के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। ये मिल्क मैंने आपको कल इंट्रोड्यूस कराया था, ये एक्सचेंज उसका ये कॉइन है, तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और सारे कार्डानो के अच्छे कॉइन्स जो कि कहीं और किसी और एक्सचेंज में आपको नहीं मिलेंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कहीं पर भी, वो आप यहाँ पर आके उनको बाय कर सकते हैं। दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी रियली राइट नाउ। इतने कम प्राइसेस में आप कुछ अगर कार्डानो के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप बाय कर लें और उसमें इन्वेस्ट कर लें तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि आने वाला ये साल जो है डेफिनेटली कार्डानो का है। बहुत ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं आपको गाहे बगाहे इसकी जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताता भी रहता हूँ कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनकी जो IPOs हैं, वहाँ कॉइन्स को आप कैसे ख़रीद सकते हैं मार्केट में आने से पहले। बहुत सारे मैंने आपको डिस्कस किए हैं, बताए भी हैं, और वो सारे कॉइन्स यहाँ अवेलेबल भी हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किन कॉइन्स को, किन प्रोजेक्ट्स को अच्छा समझते हैं। आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं जो यहाँ पर, और बड़े इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इनके मीम कॉइन्स भी हैं अपने कार्डानो के, लाइक हॉस्की है, इनका अपना जो है शीब ADA भी है, और भी इनके मीम कॉइन्स भी हैं इंटरेस्टिंग। डॉज भी है इनका, सी डॉज भी है इनका, आई थिंक सी डॉज है, कुछ और है इसका नाम, या तो बाइसन ADB, बिल्कुल कुछ मीम कॉइन्स भी हैं बड़े इंटरेस्टिंग इसके, जो कि आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज। अमेजिंग, या ये अभी नज़र मुझे, ये सी डॉग के नाम से है, सी डॉग। आई थिंक दैट्स इट। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे आज डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मार्केट्स की जो सिचुएशन थी उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी था, उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था बिटकॉइन के, तो ये रह गया, ज़्यादा उस पर बात नहीं कर सके, हम इसको उतना टाइम नहीं दे सके जितना मैं देना चाहता था इसको। खैर सारी टेक्निकल बोलिंजर बैंड से नीचे काफ़ी पड़े हुए हम, सारे टेक्निकल इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट्स को बहुत तेज़ी के साथ बाउंस बैक करना चाहिए। लेट्स सी मार्केट्स करती हैं कि नहीं। लोग फियर का शिकार रहते हैं और वेल से अपना काम दिखा देती हैं पीछे से, तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट्स नज़र डालें तो हर चीज़ जो है वो टैंक हुई है, नीचे हुई है। लूना 65 का है, BNB जो है 386 का चल रहा है, सोलाना $111 का चल रहा है, माय गॉड। XRP 64 सेंट का, डॉट $19, अंडर $20 चल रहा है डॉट। मैटिक $1.73। हर चीज़ डबल डिजिट का शिकार है लॉस का। सारे आपके फेवरेट कॉइन्स। इथीरियम $2,500 का दोबारा तो ऑलमोस्ट हम $5,000 को टच कर रहे थे, आधा हो गया उससे भूल।
तो अमेजिंग इस वक्त क्या ये प्राइसेस वापस अपने ऑल टाइम हाइस पे आ सकेंगे जल्दी कोई टाइम में? आई पर्सनली बिलीव यस। आई पर्सनली बिलीव यस। बहुत ही कम टाइम में हम दोबारा ऑल टाइम हाइस देखेंगे इन तमाम प्राइसेस को। तो अगर मेरी तरह से आप भी बिलीव रखते हैं इस चीज़ पे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप इस वक्त इस डिप से फ़ायदा उठाइए। क्योंकि एक चीज़ जो कोई उस चीज़ पे बात नहीं कर रहा है, किसी को इसका भी शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है लोगों के पास जो कि एकदम से इन्वेस्ट करेंगे एक आध महीने के अंदर अंदर। वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ यूएस में सब जानते हैं कि तकरीबन अगर आपके जो हैं वो 3-4 बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है $1000 $1200 महीना आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा था। और वो 6 महीने तक दिया गया है। जो मतलब जो जितने भी स्टिमुलस पैकेज हैं वो अलग हैं और ये अलग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज था ये स्टिमुलस का, वो तकरीबन $1000 $1200 3-4 बच्चों की फैमिली को दिया जा रहा था एक्स्ट्रा। और हर महीने, और अब वो दिसंबर तक दिया गया है। अब जनवरी से ये हुआ है कि जनवरी से जो टैक्स फाइलर्स होंगे, अब जो जनवरी फरवरी में जो टैक्स फाइल करेंगे, उनको इकट्ठा पूरे 6 मंथ का पूरा इकट्ठा मिलने वाला है वो। तो जिसको अगर $1000 मिला था तो उसको एक साथ $6000 उसके हाथ में आएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो जो 6 मंथ के पैसे एक साथ मिलेंगे आपको, यहाँ यूएस में लोगों को मिलना शुरू होंगे, उनके डायरेक्ट डिपॉजिट्स उनके अकाउंट में आने शुरू होंगे। तो वो क्या करेंगे उनका? डेफिनेटली वो ये इन डिप्स का फ़ायदा उठाएंगे, इन डिप्स को बाय करेंगे और एकदम से प्राइसेस को तेज़ी के साथ ऊपर ले जाएंगे। आई थिंक वो टाइम होगा जो कि मैं समझ रहा हूँ कि ये मार्च अप्रैल का टाइम, ये वो टाइम होगा 1-2 महीने बाद का, कि जब बिटकॉइन दोबारा ऑल टाइम हाइस पे होगा और तमाम कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर रहे होंगे। तो वो अक्लमंद लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है साइड लाइन्स पे भी, वो इस टिप से डेफिनेटली फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी जो चेंजेस हैं आने वाले हैं। और जब लोगों को पता चला है कि अगले हफ्ते ही देख लीजिए आपके फेड्स जो हैं उनका फैसला है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर हाइक नहीं कर रहा है प्राइसेस को, थोड़ा बहुत हल्के हल्के करेंगे और फेजेस में करेंगे, तो इतना ज़्यादा होता है डिले भी कर दें इकनॉमी को देखते हुए, तो होता है मार्केट बहुत तेज़ी के साथ बाउंस बैक कर जाए, बहुत ही तेज़ी के साथ। तो ये जो डिप है ये होता है गॉड सेंड, एक तरह की आपको एक अपॉर्चुनिटी है। होता है लास्ट टाइम आप ये प्राइसेस देख रहे हो सारे मार्केट की जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में इस वक्त बाइंग की। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ आज की ट्रांसमिशन। कल इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे। कल देखते हैं मार्केट्स क्या रंग दिखाती हैं अपना, वापस आती हैं कि नहीं आती हैं, वी शेप रिकवरी होता है या यू शेप रिकवरी देख रहे हैं हम, या मज़ीद नीचे जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो फिर हम देखते हैं कितनी नीचे जा सकती है और कहाँ जा सकती है। तो जब तक की नहीं फिर इजाज़त, होपफुली हम लोग कल जो है ग्रीन डे के साथ उठें। खुदा हाफिज़।